Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the 5 kingdom classification system as well as the 5 kingdoms. So let's move to the class board. So dear students, 5 kingdom classification system So in the previous lecture, we were talking about 2 to 5 kingdoms. हमने 2 kingdoms की बात की. पहले 2 kingdom थे, kingdom animalia और kingdom plantae. फिर उसमें यूग्लिना का थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ, तो फिर एक तीसरा किंगडम बन गया. ठीक है, अर्नस्ट हैकल ने 1866 के अंदर उसको बनाया. ठीक है, और उसमें यूग्लिना और बैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया. उसके बाद फिर 1937 के अंदर ई कैटन ने पहली दफ़ा टर्म जो है वो मुतारिफ़ कराई, दैट वाज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. और फिर उसी दौरान जो है एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, दैट वाज प्रॉब्लम ऑफ फंजाई, जो इससे पहले किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया था बिकॉज ऑफ द रिजेम्बलेंस विद कि उनके सेल वॉल की बेस के ऊपर. ठीक है, लेकिन पर जब मज़ीद स्टडी हुई तो पता चला कि देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो उसकी फंजाई की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं एनिमल से मिलती हैं, कुछ प्लांट से मिलती हैं, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दोनों से नहीं मिलती. सो इट क्रिएटेड बिट क्वेरीज, क्योंकि उस वक्त तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म भी आ चुकी थी, और फिर उसके बाद ये बीच में फंजाई वाला इशू भी आ चुका था. इससे पहले 3 किंगडम बन चुके थे. सो इन 1969 रॉबर्ट विटिकर, in 1969 Robert Whittaker introduced five kingdom on the basis of number 1, mode of nutrition. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अतबार से इसके 3 लेवल्स उन्होंने शामिल किए. नंबर 1, फोटोसिंथेसिस. Number 2, that is ingestion. And number 3, absorption. So these were 3 levels of mode of nutrition. इसी तरह से एक और मोड को बेस बनाया गया by Robert Whittaker, that was cellular organization. So on the basis of cellular organization, यहाँ पर भी 3 levels जो हैं इसमें डिवाइड किया गया cellular organization को. Number 1, the unicellular organisms. Number 2, the colonial organisms, which live in colonies, and in fact they are unicellular but live in colonies. And number 3, the multicellular organisms. Clear? तो ये 3 लेवल्स इसके और 3 ही लेवल्स थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. इसकी बेहाफ के ऊपर रॉबर्ट विटिकर ने बनाए थे 5 किंगडम्स. और वो 5 किंगडम कौन से थे? दैट वर
Number 1, the prokaryotes. उसमें एक ही kingdom, that is Monera. Number 2, the eukaryotic unicellular protists. Then number 3, the eukaryotic multicellular reducers, means the fungi. Number 4, the eukaryotic multicellular plants, means the autotrophs. Okay. And number 5, the eukaryotic multicellular animals. Okay. But after some time, in about 1988, in 1988, there were two scientists, Lynn Margulis and Caroline Schwartz. They modified the 5 kingdoms described by Whittaker by adding few other aspects. Clear? तो 1988 में लेन मार्कुलिस और कार्लिन श्वार्ट्ज इन्होंने कहा कि जो रॉबर्ट व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन है बिल्कुल ठीक है. उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन की है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको मज़ीद रिफाइन किया जा सकता है, मज़ीद इनके अंदर कुछ इसको बेहतर किया जा सकता है अगर इनके अंदर कुछ और एस्पेक्ट्स को ऐड कर लिया जाए. और वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे जो मज़ीद ऐड करने के बाद फिर दोबारा से उनकी रीअरेंजमेंट की गई. मतलब किंगडम 5 ही रहे लेकिन जस्ट वो मॉडिफाई कर दिए गए. ठीक है. सो वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे या वो बेसिस कौन सी थी? द बेसिस added by Margulis and Schwartz उसमें number 1 was cytology. ये इन एडिशन टू ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन शामिल है, एज इट इज शामिल है, लेकिन इनके अलावा ये एडिशन है. ठीक है. साइटोलॉजी. नंबर 2 जेनेटिक्स. नंबर 3 द ऑर्गेनेल्स of symbiotic origin, जिसमें 2 ऑर्गेनल्स खासतौर पर ये मेंशन्ड भी हैं, symbiotic origin के जो ऑर्गेनल्स हैं. एंड नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट
एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसको MCQs के लिए ज़रूर मार कर लें। द ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये आप जब सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे एवोल्यूशन, तो उसमें इनका जिक्र आएगा कि सिम्बायोटिक ओरिजिन के सिम्बायोसिस बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं और वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं। तो ये एक कहानी बताई जाती है, एक थ्योरी बताई जाती है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का एक पार्ट है कि प्रोकैरियोट्स किस तरह से यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दैट वेरी थ्योरी, कन्वर्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, आप चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन में, इफ़ यू हैव द बुक्स यू कैन रीड, नहीं तो आप सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे उसको। सो उन्होंने कहा कि जो देयर वाज एन अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट था, उसने इंजेस्ट किया, वो ऐसे माहौल में रह रहा था जहाँ पर खुराक की कमी थी या इस तरह का कोई कुछ कंडीशंस थी। अमीबा लाइक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म इंजेस्टेड द साइनोबैक्टीरिया, उसने साइनोबैक्टीरिया को इंजेस्ट किया और उसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि उसने उसको स्टेबलाइज कर लिया और उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया और बाद में चलकर उस साइनोबैक्टीरिया से बना क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह से मतलब कि सिम्बायोटिक ओरिजिन। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से बना? एरोबिक बैक्टीरिया। फिर उसने एरोबिक बैक्टीरिया को खाया, उसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया और बाद में उस एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल जो है वो आगे फर्दर चलकर बनी। So that is why these are called as the organelles of symbiotic origin. ये important MCQ है, ठीक है? So the organelles of symbiotic origin. So इसके और साथ में addition उन पॉइंट्स को भी शामिल कर लेते हैं। Mode of nutrition, and the cellular organization, वो तो as it is शामिल रहेंगी, लेकिन ये चीज़ें कुछ उसमें एडिशनल थी। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके बिहाफ के ऊपर दोबारा से सारा कुछ क्लासीफाई किया गया। तो उसमें फिर जो किंगडम्स बने जो इन्होंने बनाए थे, देवर यहाँ पर हम लिखेंगे किंगडम्स और उनके साथ साथ कुछ थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी लिखते चलते हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन इसमें गिवन है, आप ग्रेड 9 में भी पढ़ के आ चुके हैं उन 5 किंगडम्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट किंगडम दैट इज प्रोकैरियोटी। तो प्रोकैरियोट्स का सिर्फ एक ही किंगडम है, दैट इज किंगडम ओनेरा। क्या? और इसके अगर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें, सो दे mostly are unicellular, clear? और फिर इस तरह से their cell wall is made up of polysaccharides and amino acids, polysaccharides and amino acids, which is called as peptidoglycan. क्लियर? जिसको म्यूरिन कहते हैं, हम चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। आगे चलकर नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में भी डिटेल से आएगा इसके हवाले से, ठीक है? एंड दे आर हेटरोट्रॉफ्स, मोस्टली आर heterotrophs, means they are unable to form their food, and some are autotrophs. इनमें कुछ जो है वो autotrophs भी हैं, अपनी खुराक खुद भी बना सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स में आप बैक्टीरिया, ठीक है, प्लस इनके अंदर ऑटोट्रॉफ्स में साइनोबैक्टीरिया, which is also known as blue-green algae in the previous times. इसी तरह से next kingdom, that is kingdom
Protoctista, or also known as Protista. या इसका एक और नाम है डियर स्टूडेंट्स, इसे किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन. क्लियर. रीजन के बाकी तमाम जो अगले जो बड़े बड़े किंगडम्स हैं, किंगडम फंचाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, जो ऑर्गेनिजम्स उनमें फिट नहीं हो पाए उनके किंगडम की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली, उन सब को वहाँ से एक्सक्लूड किया गया, निकाला गया और उन तीनों को इकट्ठा कर दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर. क्लियर. इसी वजह से इसमें 3 तरह के हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. एनिमल लाइक, which are called animal-like protists, which are called as protozoans. इनको एनिमल लाइक क्यों कहते हैं? बाकी सारी प्रॉपर्टीज एनिमल जैसी हैं. दे लैक सेल वॉल, दे आर हेटरोट्रॉफ्स, दे शो मूवमेंट, बट द रीजन वाज कि जो एनिमल्स हैं दे आर ट्रूली मल्टीसेलुलर, दे आर ट्रूली मल्टीसेलुलर. लेकिन यहाँ पर जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स हैं दे आर यूनिसेलुलर. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है अमीबा, पैरामीशियम, etc. So these are the animal-like protists which are called as protozoans. And don't worry, इसका एक पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके ऊपर. एंड इसी तरह से the plant-like protists, अब वो थे पहले किंगडम प्लांटी में, लेकिन वहाँ से उनको निकाल दिया गया, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया. द रीज़न इज़ अगेन देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी हैं, लेकिन फ़र्क क्या था कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर ट्रू मल्टीसेलुलर, दे आर ट्रू मल्टीसेलुलर, जबकि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट दे आर कॉल्ड एज एल्जी. दे आर कॉल्ड एज एल्जी, लाइक red algae and green algae. ठीक है. सो दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर हैं, जबकि प्लांट्स होते हैं द ट्रू मल्टीसेलुलर्स. मतलब कि सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते और इनके अंदर बनते हैं वगैरह वगैरह, वो आगे चल के डिटेल्स में देखेंगे. इसी तरह से इसके अंदर तीसरे जो कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स. फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स, और इसमें आगे 2 कैटेगरीज शामिल हैं, वो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर. फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स. क्लियर. और फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं के जो जिसकी तरह के हैं, एनिमल लाइक हैं, प्लांट लाइक है, फंजाई लाइक, तो तकरीबन वैसी हैं. क्लियर. अब फंजाई लाइक जो इनको वहाँ से रिमूव किया गया, इनके सेल वॉल में डिफरेंस आ रहा था, सेंट्रियोल्स का डिफरेंस आ रहा था, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे. अभी हम जस्ट जनरलाइज्ड पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं इनके किंगडम्स के, 5 किंगडम्स. द थर्ड किंगडम इज द किंगडम फंजाई. Which are also known as multicellular reducers, और they're also known as recyclers. इनको recyclers भी कहा जाता है. ठीक है. They are involved in the recycling because इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है decomposers का शामिल. So fungi mostly they are multicellular. Some are unicellular. Clear? जैसे कि yeast. And their cell wall, तो किससे बनती है dear students? Cell wall is made up of, chapter number 4 आपने पढ़ा इसमें, made up of chitin. Clear? And their mode of nutrition is absorption. Most of them, they are the decomposers, have enzymes, and
they for decomposition, and they are involved in, after decomposition, they absorb the nutrients. ingest नहीं करते बल्कि absorb करते हैं. Okay? और इसमें अगर एग्जाम्पल्स पे जाएं तो mushrooms and puff balls and yeast unicellular इसमें फंगस में आएगा. क्लियर? इसी तरह से the fourth kingdom, that is kingdom Plantae. They are true multicellular, and they are producers. They are called as producers. And as well as their cell wall, तो किससे बनती है dear students? Their cell wall is made up of cellulose. ठीक है? Their primary cell walls, cellulose, and their mode of nutrition, that is photosynthesis. ये photosynthesis करते हैं और इसी वजह से they अपनी खुराक भी पूरी करते हैं और इनकी ऊपर डिपेंड होते हैं. The other organisms which are called as heterotrophs, for example, mosses, liverworts, and ferns, and gymnosperms, and angiosperms. सब कैटेगरीज चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी के अंदर हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? एंड फाइनली द किंगडम एनिमेलिया. So the animals, they are also true multicellular, मतलब कि इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती है. नंबर 2, they lack cell wall, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती. इसी तरह से they just show locomotion. Clear? They show locomotion, ये मूव करते हैं. And they are heterotrophs, ingestive heterotrophs. They cannot prepare their food. Like the fungi, they are also heterotrophs, but they are absorptive. And examples include birds, reptiles, insects, mammals, fishes, etc. And according to evolutionary concept, it is considered that from the prokaryotes there is the emergence of the protists, and from protists there is the emergence of the other 3 kingdoms, the kingdom of fungi, animalia and Plantae. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे वायरसेस को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.